Hello dear children, welcome to SST classes with Amin sir. Dear children, let us start with the topic Resources and Development for class 10th Geography. Children, how can we define a resource? रिसोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रिसोर्स हम किस चीज को बोलते हैं? सी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग्स में देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स which are living things as well as non-living things which we can see every day. तो ये living things and non-living things, when they are useful, satisfy our needs, we call them as resources. जो भी चीज इस्तेमाल के काबिल होगी, हमारी जरूरियात को पूरा करती है, तो उस चीज को हम एक रिसोर्स बोलते हैं. लेट अस डिफाइन द रिसोर्स. तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं. All things in our environment living and non-living, ये जरूरी है क्योंकि ये तो लिविंग थिंग होगी या नॉन लिविंग थिंग. लिविंग एंड नॉन लिविंग that are useful and satisfy our needs are called as resources. तो ये living and non-living, besides when they satisfy our needs and are useful, so we can call those things as resources. Now children, when you write the definition, it is very much important to write the definition with the examples, because when you are writing something, you are writing something about a thing, about a resource or anything, you have to explain it with the help of examples. So that shows about your concept clearance. So it is very much important. Now I will write here some examples of the resources. See, हमें resource definition के बाद example लिखने के लिए कोई rocket science की जरूरत नहीं है. आपके साथ ही बहुत सारे resources होंगे. See, I have this pen in my hand. This is a resource because I am writing with the help of this pen. I am wearing these clothes, so these clothes protect me from heat and this cold as well. So they act as the resources. I am writing on this whiteboard. This whiteboard acts as a resource. I am mobile. You have mobiles. Your cars. You live in the houses. You go to the school. School is a resource. Your doctor is a resource. And your teacher is a resource, your houses are resources, roads are resources, cars are resources, aeroplanes, animals are resources, agriculture is resources, food is resources. Everything in this environment what you see is a resource because they are useful and satisfy our needs. So while writing the examples, you need not to learn them. Just see around you and see some examples, you find things around you, you can put them as examples. You can write them as examples. Like I will write, this pen is a resource, your book is a resource, this whiteboard is a resource, your car back at home is a resource, your house is a resource, road is a resource, and also we have schools, resources, we have also the food, that is a resource,
and you have also the trees around you, they are resources. You have the water, that is a resource. You have air, that is a resource. You have minerals, etc. All these things can be called as the resources, examples of the resources. Now if you see around you or in this world, there are millions and billions of things which we can call as resources. Now one thing is here. We have some of the examples like pen, resource, book, a resource, car, a resource, house, a resource, roads, resource, schools, resource, water, resources, air, resources, minerals, resources. Now I have not marked food and trees. What it indicates? I have written here, jotted down on the board, living and non-living things. Both are present in the environment and both can be called as resources when they are useful and satisfy our needs. Now you can see the pen, book, car, house, roads, schools, minerals, water, air. These can be grouped as the non-living things. They belong to the abiotic world, non-living world. They don't have the life. Now what we talk about the trees can be called as living thing because they have life. Now the food which we eat, in appearance, when we see the food, this is non-living. But where from this food has come? This has come from the living world, agriculture, from the plants. So the origin of the food can be called as living, but when we see in existence, this is non-living. I hope this is clear to you. Similarly, we have animals. They are living. Humans also. Human beings. They are also living. So when you write the examples with the definition, you need not to be worry about writing the example. Just see around you. You have many examples of the resources with you. You have the book, a bag. You have, if you are back at school in the classroom, your room is a resource. The desks on which you sit, that is a resource. Chair is a resource. Your board is a resource. Your teacher is a resource. And your pen, your books, your clothes, your shoes, socks, everything is a resource. So there is nothing to worry about while you write the examples of the resources. So I think this is clear. Now coming back, definition: all things in our environment, living and non-living, that are useful and satisfy our needs are called as resources. For example, pen, you need to write only 4 or 5 examples. Write like this way: 2-3 examples of non-living world and 1-2 examples from the living world. So this will be the complete definition in simplest way as the definition of the resources. Now there are some criteria, some requirements for the resource to be called as a resource. Especially I will tell you, when we have a thing which can be called as a resource, it should fulfill at least 4 requirements. We have different things and those things should fulfill 4 requirements to be called as a resource. Now what are those 4 requirements? Now, what are those 4 requirements for a thing to be called as a resource? Now, the requirements. What are 4 requirements? Number 1, we can say
The resource should be technically feasible, economically feasible. Now, what does this mean? Economically feasible? This is associated with especially the extraction of the resources. जब भी हमारे पास रिसोर्स आते हैं, रिसोर्सेज निकालते हैं ज़मीनों से, समंदरों से, जंगलात से, तो ये रिसोर्स जो है इसका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड बी लेस देन द कॉस्ट इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पेन बनाया, ये मेरे हाथ में पेन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आई विल पुट इट. ये मुझे बनाने में 10 रुपये लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू 5 रुपये है. मुझे इसको 5 रुपये में बेचना है क्योंकि बाकी कंपनीज भी इसको 5 रुपये में बेचते हैं. तो क्या मेरे लिए नुकसानदेह है कि फायदेमंद है? इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट? क्योंकि 10 रुपये तो मुझे इसको लगे हैं बनाने में, बेचना मुझे 5 रुपये, तो दिस इज नॉट इकोनॉमिकली फीजिबल. Although this is a resource, but economically this is not feasible. So ये है कि रिसोर्स को जब हम लेते हैं एज ए रिसोर्स किसी भी चीज को, तो उसकी कॉस्ट होनी चाहिए कम एक्सट्रैक्शन के टाइम में एज कंपेयर टू द मार्केट रेट और द सेलिंग रेट वी कैन से. नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल अबाउट दिस. कॉपर इन इंडिया. कॉपर इंडिया का जो है, व्हेन इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉपर माइंस, इसका और जब निकालते हैं, इस कॉपर में से निकलता है 1% परसेंटेज के हिसाब से. इसका क्या मतलब है? जब मेरे पास हमने कॉपर और 100 kg निकाला, तो उसमें कितना मुझे आता है कॉपर जो निकलता है कॉपर बाद में ओवर से. जब हम इसको अलग करते हैं, स्मेल्ट करते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, साइंस में तो पढ़ा है आपने. इट्स अ प्रोसेस बाय विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. तो कॉपर जब हम कॉपर ओर से निकालते हैं 100 kg में से, तो इसका इंडिया में निकलता है स्लाइटली थोड़ा सा +1%, यानी 1 किलो से थोड़ा ज्यादा निकलता है. इसका मतलब है 1 kg. ठीक है, तो 100 kg हमने और निकाला, उसको ढूंढने के बाद, स्मेल्टिंग करने के बाद 1 किलो कॉपर इसका निकलता है. लेकिन इंटरनेशनल एवरेज कितनी है? दैट इज 2.5%. दैट मीन्स 2.5 kg, 2.5 kg. तो ये निकलना चाहिए हमें, क्योंकि 100 किलो और निकालने में खर्चा उतना लगता है, जो प्रॉफिटेबल बनेगा बाद में कॉपर, वो कम से कम 2.5 किलो निकलना चाहिए. तभी तो मुझे ये अपना लेबर चार्जेस वगैरह जो खर्चा मैंने किया हुआ है वो मुझे आएगा और थोड़ा सा नफा भी आएगा. क्योंकि यहाँ ज्यादा पैसा लगता है और को निकालने में, लेकिन फिर 1 kg ही निकलता है और 1 kg की कॉस्ट मार्केट में कम है. तो एक्सट्रैक्शन में ज्यादा पैसा लगता है कॉपर निकालने में इंडिया में, और जब हम उसको बेचते हैं मार्केट में तो 1 किलो का पैसा एक्सट्रैक्शन से कम आता है. सो इस वजह से देयर आर मेनी कॉपर माइनर्स इन इंडिया विच हैव बीन लेफ्ट अबंडंट. उसमें काम वगैरह नहीं होता है, उसमें कॉपर नहीं निकालते. सो इंडिया क्या करता है कॉपर के लिए, क्योंकि कॉपर की तो जरूरत है, ये तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है. सो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कॉपर फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये हम इसको बोलते हैं कि जो हमारा होना चाहिए रिसोर्स जो है, इट शुड फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज इट शुड बी इकोनॉमिकली feasible. तो ये हो गया एक रिक्वायरमेंट. तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? एक चीज को हम रिसोर्स बोल सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? तो बच्चों उसके लिए हमें होना चाहिए, दूसरी बात जो है, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेड. इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेड. कल्चरली एक्सेप्टेड. तो ये क्या मतलब है इसका? किसी भी रिसोर्स को, हम चीज को तभी रिसोर्स बोलेंगे जब वो कल्चरली एक्सेप्टेड होगा. सी, वी आर लिविंग ए लाइफ अंडर द लॉ. कानून के तहत हम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जिंदगी बसर करते हैं.
लेकिन हमें वो काम नहीं करनी चाहिए जिसकी इजाजत हमें कानून नहीं देता है. When the law is not allowing us to do certain things, we should not go for them. We should not do them. We should not take the law in our hands. Now, there are so many resources which are used by some people, but they are not liked in the society. They are not liked. They are not allowed by the law of the land. कानून उन चीजों की इजाजत नहीं देता है. For example, we have resource like brown sugar. The people who are drug addicts, they use the brown sugar. They use the ganja, charas, अफीम, अल्कोहल एट लार्ज स्केल. ये चीजें उनको सेटिस्फैक्शन देती है, लेकिन दूसरे तरीके से उनके सेहत को तबाह व बर्बाद करती है. इसीलिए कानून इसकी इजाजत नहीं देता है. कानून कहता है कि ये चीजें गलत है, इनको इस्तेमाल मत करो. गैमलिंग, जुआ, उसको भी कानून इजाजत नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं. मगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है. सो ये चीजें जी लाइक गैमलिंग है, कंज्यूमिंग ऑफ वेरियस ड्रग्स, they are not allowed by the society, so they are not culturally accepted in the society or by the law. इसीलिए ये चीजें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेड, जो सबको सोसाइटी में एक्सेप्ट हो, हर किसी को वो पसंद हो वो चीजें. ना तीसरा रिक्वायरमेंट जो इसकी है कि क्या होना चाहिए एक चीज को जो इसको रिसोर्स बनाता है. सो वो होना चाहिए इसका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. what does this mean? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. सो रिसोर्सेज हमारे पास जब होंगे, क्योंकि ये तो एक्सट्रैक्शन के साथ भी इसका ताल्लुक है, रिसोर्स निकालने के टाइम में, तभी रिसोर्स कोई चीज हम बना सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं. व्हेन इट इज एक्सेसिबल टू अस, इट इज द रिसोर्सेज शुड बी, द थिंग्स शुड बी विद इन आवर रीच. तो हम अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, लाइक मॉडर्न मशीन्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करके उन चीज़ों को निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अभी टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन वो रिसोर्स है मगर हम उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो हम उसको फिर ऐसा ही बोलते हैं कि ये साइलेंट कंडीशन में है, रिसोर्स है लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है. टेक्नोलॉजी नहीं है फीजिबल कि इसको निकाल सके, क्योंकि ये रिसोर्स हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है. लाइक मैं आपको एग्जांपल एक दे दूं. अभी तो इंसान तो चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चांद पे क्या है, क्या चीजें वहां पे है, किस चीज को वहां इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अभी ये हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद से वो चीजें सारी ला के जमीन पे हम ले आए. इसी तरह हम नहीं जा सकते हैं अभी सन की तरफ, क्योंकि सन इतना गर्म है, although it is very far away from us, तो वहां पे अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वहां उन चीजों की तरफ जाए, एक्सप्लोर करें उनको. या देयर आर सो मेनी स्टार्स, सम अदर स्टार्स, प्लैनेट्स एज वेल, अर्थ के बगैर. तो उनके पास अभी वो इतने दूर हैं कि अभी इंसान अगर पैदा होते ही उसको रॉकेट में डाल के ऊपर भेज देंगे, अगर वो जिंदा भी रहा 70-80 साल तक, तो वो मामूली सा टाइम है, क्योंकि वहां तो सैकड़ों साल लग सकते हैं इंसान को वहां पहुंचने में. सो वो रिसोर्स हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है. और इसी तरह बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज समंदरों के नीचे हैं जहां हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन चीजों को एक्सप्लोर करें. कुछ पॉइंट्स पैसिफिक ओशन में दे आर वेरी मच डीपेस्ट पॉइंट्स इन द वर्ल्ड, लाइक मरियाना ट्रंच एक है. तो वहां पे भी मुश्किल से ही अभी हमारे जो है ये साइंटिस्ट वगैरह जो जाते हैं, लेकिन वहां की चीजें हम वहां से ला के उनको फिर इस्तेमाल करना ये एक बहुत बड़ा मसला है. जैसे हमारे लद्दाख में वहाँ सोना है पहाड़ों में कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि लद्दाख जाके उनको एक्सप्लोर करें, उन पहाड़ों को काटे, उनको ढूंढे, उनको देखें. सो इट विल टेक टाइम व्हेन वी हैव मच मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल वो मतलब ये है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम इस्तेमाल करके आसानी के साथ रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उनको इस्तेमाल करेंगे. सो रिसोर्सेज
का ये तीसरा रिक्वायरमेंट है। किसी चीज को हम रिसोर्स कहेंगे जब वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करेंगे और उसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज है दैट इज, वेल चिल्ड्रन, वी वर टॉकिंग अबाउट रिक्वायरमेंट्स फॉर ए थिंग टू बी कॉल्ड एज ए रिसोर्स। किस चीज को हमें रिसोर्स बनाता है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट। थ्री वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, economically feasible, resource should be economically feasible, resource should be culturally acceptable, and it should be technologically accessible. Now the fourth one is community acceptance. This is pertaining to the religious. Since we in India live people amicably, there are so many people who belong to different religions. We are here in in India, Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, and so on. Different religions have different means of cultures, way of wearing clothes, different languages, and different means of worship, and above all, different eating habits. See, we can call a thing as a resource when it is also accepted by a community. In India, one community is not in favor of consuming meat of various types, chicken, mutton, beef, etc. And at the same time, another community is in favor of consuming meat of various types, like chicken, mutton, beef, etc. One of the community is in favor of consuming meat. Another community is not in favor of consuming meat. Although meat is a resource, it is consumed by the Muslims, consumed by the Jews, Christians, Buddhists, and a community, some portion of Hindus as well. But in the same religion, in the same community, Hindus, some people are in favor of consuming only vegetables, so we call them as the vegetarians. So vegetables for them act as the resources. And other religions, people belong to other religions, they consume meat. For them, meat is a resource. So this is also one of the requirements for a resource to be called, for a thing to be called as a resource. So somewhere we can see various things which are resources for a section of the society. At the same time, the same thing is not acting as a resource for other part of the community. So this way we can say, when we have all these four requirements, essentials, a thing can be called as a resource. I hope this is clear to everyone. Now we discussed so far about the definition of the resource. We discussed that living things, non-living things in the nature, they are the resources. We also discussed about that which things are non-living and which things are the resources as living. Now children, all the things which are made by the human beings see, among all the resources, made by human beings,
with the help of natural resources. We call them as man-made resources. Let's see, we can see millions and billions of things in the world which have been made by the human beings. What we call them as man-made resources. Now, all man-made resources are non-living. Man-made resources are non-living. But how human beings make them? Human beings transform the natural resources. Here I have written these natural resources which are present in the nature as natural resources. Human beings transform them, change them into things of utilities, into finished products. Then we use them. So the things which are made by the human beings. So listen one thing. Human beings so far have made nothing of their own. What they have made so far, they are using the natural resources. So natural resources are converted into or transformed into man-made things or other things of utilities. Later on we use them. So all the things which are made by human beings, they are called as man-made resources, and the things which are naturally present, we call them as natural resources. Resources that are naturally present, available, we can write. Resources which are naturally available are called as natural resources. So remember these things. Natural resources are those resources which are present in the nature. Now here we can also write examples like we have trees, air, animals, minerals, land, etc. Now here we can give the examples like we have the pen, we have cars, we have buses, roads, this I have already taught you, etc. So all these are man-made things made by the human beings with the help of natural resources. Remember one thing, so far human beings have not made anything of their own. Whatever they have made so far, they have taken the help from natural resources. So natural resources are used as a raw material and it is converted into finished products. A finished product is anything which is ready to use. So this is clear, I think, to you all, and this completes the resources, definition of the resources, living, non-living things, man-made resources, natural resources, and the requirements that are needed, that are required for a thing to be called as a resource. I think this topic is very much helpful to you. For any queries, you can contact me through YouTube. Inshallah, very quickly I will upload all the things and you will get them back at home very easily. Now children, remember one thing. When you are in the school, mostly the students do not take SST very seriously. The reason is mindset. Most of students have this mindset. उनका mindset ये है
कि चलो जी पेरेंट्स का भी माइंडसेट है डॉक्टर बनाना है बच्चे को, इंजीनियर बनाना है या लॉयर या कुछ और, तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है आजकल हर जगह पेरेंट्स को, और इसके लिए बहुत बड़ी रकम पैसे पेरेंट्स खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे फील्ड और है जहां पे आप काफी एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। देयर आर वेरियस बेटर ऑप्शंस, एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, बिजनेस ऑप्शन इज एवन। नाउ आपको तो पता होगा कि 12th क्लास के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद कितने बच्चों को ये मेरिट लिस्ट में नाम होता है? हार्डली 5 to 10% फ्रॉम वन स्कूल, इवन लेस देन दैट। तो बाकी बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो तो या तो ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फाइनली उनको तो जॉब ही करना पड़ता है। क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स एसएसटी की वजह से जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहां पे उनको एक प्रॉब्लम ये होती है कि कंसेप्ट उनकी क्लियर नहीं होती है रिगार्डिंग द एसएसटी। और जब पेपर उनको मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक आईएएस, केएएस, आईपीएस और वगैरह जो भी है, या किसी जॉब के लिए भी, और तो वहां पे जब वो पेपर उनको मिलता है तो उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होता है दैट is based on the geography, history, political science, economics, disaster management as well. तो ये बहुत बड़ा पोर्शन बहुत सारे बच्चों को मुश्किल से ही करना आता है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट दूसरी चीजों की तरफ होता है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है 9th क्लास 10th क्लास में इन चीजों की तरफ। और ये एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट थ्रू आउट लाइफ जरूरत पड़ता है, चाहे आप किसी जॉब में भी जाए वहां भी आपको ये जरूरत पड़ता है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इसलिए बेहतर है कि डेवलप योर इंटरेस्ट टुवर्ड ज्योग्राफी एज वेल एज द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी एक्ट, इन सब की तरफ अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। और आगे ऊपर वाले के हाथ में है कि आपको इंट्रांस में लिस्ट नाम होता है या नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब आप आगे फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाओगे, जॉब्स के लिए जाओगे, तो वहां आपको ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट टाइम वी विल I would like to see you in next lecture where we will start the classification of the resources. Till then, have a nice day. God bless you.